Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. जय हिंद दोस्तों। भारत के डीजीएमओ राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ चौधरी के बीच 12 बजे अहम मीटिंग होने वाली है। सवाल इस बात के हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हो सकता है। दरअसल कल ही जब भारत के तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो राजीव घई सर ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया था। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर वहाँ से एक भी गोली आएगी तो यहाँ से बदले में 100 गोलियाँ जाएंगी। किसी भी प्रकार का अगर उकसावा होता है मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। अगर दुश्मन इन्फिल्ट्रेशन यानी कि मिलिटेंट की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है तब उस पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके बाद ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं। जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने तमाम आर्मी कमांडर को ये ऑर्डर दे दिया है कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दुश्मन की आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल पाकिस्तान की कल जो ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग थी, वो देश के लिए थी, लेकिन आज जब डीजीएमओ की बातचीत होगी तो फिर वो ऑफिशियल बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ पर के साथ, और वहाँ पर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को कि अगर आपने फिर कोई मिलिटेंट की घुसपैठ कराने की कोशिश की, अगर भारत के अंदर कोई मिलिटेंट अटैक होता है और उसके पीछे आप होते हैं, और अगर आपकी तरफ से चाहे वो स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो, ड्रोन अटैक हो या कोई दूसरा अटैक हो, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब बात जो है मुंह से कम और हथियारों से ज़्यादा की जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि आज जो 12 बजे डीजीएमओ की बैठक होनी है उसमें ये डिसाइड होगा। और कल भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया था। पाकिस्तान बेशक कितना प्रोपोगेंडा फैलाता रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि जहां हम चाहेंगे वहां घुसकर आपको मारेंगे और आपको पता भी नहीं लग पाएगा। और आज यही काशिफ चौधरी को भारत बताने वाला है। तो थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना होगा। 12 बजे डीजीएमओ की बैठक है, क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है कि अब बात जुबान की नहीं है, अब बात जो है फिर अगर बिगड़ती है तो फिर हथियारों से ही जवाब दिया जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे 12 बजे का कि क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। शुक्रिया। In the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on Hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak Dgmo was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart
highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor.